श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है TVS Ronin रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है 2022 TVS Ronin रिव्यू, द TVS Hello and welcome to Zig Wheels. Today we've got with us TVS's Ronin, which is a bit confusing. And on this very rainy day here in Goa, we've been able to spend some quality time with it, in which we've stripped away at some of its layers and examined some of its promises to understand what kind of a motorcycle it is. But first, we'll start with, what is it? Because the Ronin, unlike its concept version, the Zeppelin, isn't just a cruiser, although that's where it starts. Well, if you look at the forks and the way they're splayed out, you think this was a cruiser, right? Now, if you looked at this part of the motorcycle, the musculous tank, and the way the foot pegs are positioned a little bit forward, you'd say it was a roadster. And then, if you came to this portion of the motorcycle, the high mud guard with those chunky tires, you'd say it was a scrambler. But if you zoom out and look at that long wheelbase, and even if you look at the chain cover, the way it's got that massive cover running, almost like a belt drive, you think it could be a cruiser. Now surely you won't have an issue with the design elements that make up this motorcycle. The wheelbase is long enough, the tank is chunky enough, but it still does feel a bit small, doesn't it? Well, let me explain. When you look at the CB350 RS or the classic 350, those motorcycles are running on 19 or 18-inch rim combinations, which just allows them to have a stance that just makes them bigger. Whereas the Ronin is running on 17-inch rims, and that kind of dictates, along with its tires, the kind of stance that it can pull off. Now when you look at it in parts, the Ronin does feel impressive. For starters, that headlamp is immediately recognizable and does look premium, as do those front forks here on this top-end variant, because it's finished in gold for this one. It also is a little bit more premium in the way it looks, because this muscular tank, which reminds us of a particular motorcycle, some of you have already guessed which one, gets this pinstriped element, but keep in mind that's of course a sticker. And along with that, you also have that typical TVS quality in terms of build. It is absolutely the benchmark setter. And aside from that, you get this funky looking instrument cluster, which is packed with a fair amount of information and also connects to your mobile device through the TVS app and allows you to use a voice assistant, which can help you through navigation when you're on the go. Okay, the one thing I did not like is this grab rail. It just looks a little bit of an afterthought, but again, on the plus side, it is, well finished. Basically, if you can put aside the confusion regarding how the Ronin looks and get onto the saddle, you realize from there it feels like a substantial and satisfying motorcycle. The top spec model also gets pan adjustable levers and more connectivity features for added substance. Hopefully that explains how and why the Ronin looks, but now let's talk about how it rides. With a split cradle frame, show-up big piston upside-down forks and bespoke TVS Remora tires, the Ronin sounds solid and premium.
doesn't have a starter motor. Just listen to the way this starts up. Softly. So fewer revs required every time you start up, which is saving every little drop of fuel. Along with that, it has basic cooling elements added onto it, which makes the engine more efficient. And TVS has also tried to reduce rider discomfort from engine heat at low speeds. The engine itself is delivering 20 PS of power and 20 Newton meters of torque, which doesn't sound much, but keep in mind that this is 20 kilograms lighter, 21, than the CB350, which is a lot. And on top of that, this is supposed to deliver a lot of torque at low revs. There's more. TVS claims it will be faster to 60, it will overtake more easily, that it will lug better and climb up mountain slopes better. And the performance from the saddle is pretty much as advertised, which is to say competent, if not very exciting. Let me explain. In terms of the drivability, this thing is fantastic. You can pull from 20 kilometers an hour in 4th gear without a hiccup. 5th, just a bit more and it'll pull. You could crawl over speed breakers in 3rd or 4th without even realizing. The engine is smooth, has just the right kind of pulse to give you that connection with the motorcycle. At the same time, if you want to put on speed and get out of the city where it feels pretty much at home, you will find that it also puts on speed nicely, getting up to 90, 100 kilometers an hour without too much of an effort. But going past that might be something we'll have to explore at a later point in time. But anyways, its top speed of 120 isn't exciting. But I think overall this is meant to be an easy all-rounder, and in that sense, it does feel competent. fuel efficiency as per TVS should be better than its rivals by a healthy margin. So with its 14-litre fuel tank, it could also outlast the others. As a motorcycle, the Ronin is trying to cover a lot of ground, and from our experience here today in Goa, the way the suspension works, the way the engine just makes things easier, the way it kind of connects with the rider, the Ronin certainly does seem like a very capable motorcycle. If TVS were to make 3 different motorcycles, a scrambler, a cruiser and a roadster, on this platform, we think it would unlock the awesomeness, ability and appeal of this platform. Now, even in terms of its pricing, it's making a lot of sense, but if you want to look past the capability and the sensible quotient of the Ronin and start looking for personality and compare it to its more traditional rivals, that's when you realize that probably this won't tug at your heartstrings the same way that they do. जी जनाब, ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू टोटली। हाँ, लेकिन बस मैं थोड़ा सा कीमत को लेकर बोलूँगी कि मतलब 1,70,000 वहाँ के, तो यहाँ के 3-4 लाख बाइक 2.5-3 और 3 से भी रख लेना 170, तो 170 340 ही हो गए, और आप कह रहे हैं कि डबल से भी ज़्यादा ही है, तो चले हम 4 तक लगा लेते हैं, 3.5-4 तक की कहानी जा रही है। तो इससे ये कहेंगे कि मतलब मुझे ऐसा लगा कॉस्टली ज़्यादा है, एक्सपेंसिव लगी जो बात है, क्योंकि मैं अपना रिव्यू दूंगी। लेकिन ये है कि बाज़ मतलब जैसे 5 से 6 लाख में कार आ जाए, ठीक है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं देख रही हूँ, नहीं ये कह रही हूँ वहाँ पे जो मैंने उनको इतना समझा है, उनके व्हीकल्स वगैरह के हवाले से जो इतनी वीडियोस देखी हैं, टाटा है, दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, तो वहाँ पे कमी नहीं है इन चीज़ों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाइक के ये प्राइस ज़्यादा है, इससे कम होने चाहिए थे। बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि 4 लाख की बाइक तो मेरे हिसाब से कॉस्टली है। 4 लाख की बाइक तो कॉस्टली है, लेकिन 4 लाख बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, तो 1 लाख इनफ। लेकिन 4 लाख 3.5 लाख तक की आएगी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम देखे जाए। नहीं, डबल हम करें, आपने बोला डबल से भी ज़्यादा है। डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 5 से 6 लाख में कार आ जाए,
हाँ। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि इसका जो स्वैग है, इसका जो शौक है, अच्छा ये जो मेन चीज़ है इसका है, ये एक शौक, अलग ही शौक होता है। शौक किया है, फिर सही उसके कह रहे हैं। उसके उसका मोल नहीं है, शौक अच्छा का कोई मोल नहीं। दूसरी चीज़ है कि मैं कहता हूँ लुक इन्होंने बहुत प्यारा दिया, बहुत अच्छा दिया लुक। attractive दिया। अच्छा एक चीज़ और है कि टायर मतलब नॉर्मल से हट के मुझे थोड़े से हैवी लगे, टॉर्क वगैरह भी इनकी- अच्छा, और हाँ। स्पीड के हवाले से बहुत अच्छी है। बाकी ग्रिप इनमें बहुत अच्छी है, ग्रिप अच्छी है, और दूसरी बात ये 14 लीटर्स बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल, या अल्लाह, मतलब मैंने अच्छा। फर्स्ट टाइम सुना है इतना। असल में इसका कार्स फ़ायदा का तो नहीं, लेकिन मैंने बाइक का तो पहली बार इसका सुना फ़ायदा इतना। ये होता है हाँ। कि आप कोई लॉन्ग रूट पे जाते हैं और बाज़ मरतबा रास्ते में पेट्रोल पंप इतने आते नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी लेकिन ज़बरदस्त फिर भी बात 14 है। लीटर बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो बेनिफिट है ना एक तरह बहुत से। बड़ा बेनिफिट है। एक- दूसरी बात ये, इन्होंने जो राइड ली, तो ये ली इन्होंने बारिश वाला जो थोड़ा सीज़न था, ये या और रिस्की हो जाता हाँ, है। ये थोड़ा एरिया वैसा चुना है इन्होंने, या शायद ये वहीं थे, उन्होंने शूट ही वहीं किया। तो मैंने देखा कि बारिश तो बात हो रही थी। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई क्या? कि जिस तरह कार हो या बाइक्स हो, इस तरह के खूबसूरत किस्म के मौसम में जब हवा चल रही हो, वहाँ पर ये रिव्यू देते हैं, इसकी क्या लॉजिक है, ज़रा आप बताएं। फिर अच्छा लगता है आंखों को, एक तो ये, और दूसरी बात ये टेस्टिंग भी अच्छे तरीके से होगी कि पानी में ये कैसा वर्क करिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है बारिशें होती हैं तो ज़्यादातर बाइक्स बंद हो जाती हैं, कार्स तक बंद हो जाती हैं, जवाब दे जाती हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात, आप जवाब दीजिएगा इसका, मैं एक और बात हाईलाइट करवाना चाहूँ। हमारे यहाँ बारिश होती है, पपड़ियों की तरह उखड़ जाते हैं। नए नए रोडों की मैंने वो हालतें देखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे अंदर पास। से गुठली होती है ना, पत्थर हाँ, वो आ जाते हैं, और दोनों किनारे तो बिल्कुल खुद जाते हैं, ऐसा लगता है बाकायदा खुदाई की गई है उनकी। एक ऐसी भी वीडियो देखी है बारिश में हाँ। कि बाकायदा एक बंदा, बारिश में नहीं नॉर्मल रोड बिछा हुआ है, डामर पूरा बिछा हुआ है आधे इंच का, ठीक वो है। अपने हाथ से उखाड़ रहा है पूरा रोड, हाथ से उखाड़ के दिखा रहा है, यानी कि तय पड़ी हुई है, बस ऐसा लग रहा है। हाँ। नीचे एक नया रोड है पुराना वाला, और ऊपर से नया रोड उखाड़ रहा है, बस ये वो देखो। डामर की लेयर थी, मतलब बोला ये देखो ये रोड, कि बस ये रोड है। तो मैं ये कहूँगी, अभी मैंने जो वीडियो में रोड दिखा, इतना स्वीटेबल, इतना स्मूथ कि यार यहाँ पे तो राइडिंग का मजा ही कुछ और होगा। कोई भी गड्ढा नहीं दिखा मुझे, कोई सा भी कम ज्यादा नहीं दिखा, बिल्कुल इक्वल। अच्छा बिल्कुल स्मूथ। यहाँ पर गाड़ी टर्न कर रही है, टर्न। टर्न इतना खतरनाक होता है बारिश के अंदर कि अपनी गाड़ी स्लिप हो जाए। मैंने ये देखा है हमारे रोड पे सीधी सीधी गाड़ियाँ आती स्लिप हो रही हैं, यानी कि अगर बारिश अगर सी हो जाए, ये मेरी समझ से बाहर है, क्या वजह है, सीधी सीधी गाड़ियाँ आ रही है, एक गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, तीसरा गिर रहा है, हाँ हाँ, देखी मैंने, देखी। मतलब कमाल है यार कि सीधा सीधा आते हुए भी आप गिर रहे हाँ, हो बिल्कुल ऐसे ही। बारिश की वजह से। अच्छा, लेकिन एक और बात, जब टर्निंग पॉइंट इन्होंने दिखाया था तो इन्होंने ये कहा कि हमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालनी पड़ी है इस बाइक को टर्न करने में, जबकि बाइक अपने आप में बड़ी स्वैगी, बड़ी मतलब एक भारी भरकम बाइक है, लेकिन उसको इतनी इजीली टर्न कर लिया जा रहा है, तो ये मैं कहूँगी कि इसका प्लस पॉइंट है, वो भी बारिश के